hesitance. I leave it to the singers to carry on from there. Kindly switch off your mobile phones. Please switch off your mobile phones or at least put them in complete silent mode. Make sure that all the provisions of noise from the phone is shut off, including alarm and other things. वो काट देगा तो दोबारा से करो। एक मिनट कमी गल ठीक है हेलो 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 अच्छा और कम हो गया हेलो 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 सामने Hello, hello, sit, hello. हेलो हेलो बाहर पे कितने हो गए
शांति बंद कर दो প্রেম ভরে মনের গাবো রাম কৃষ্ণ নাম, রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম। প্রেম ভরে মনের গাবো রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম। অন্তরে জগরে রাম মনে রাম রাম, অন্তরে জগরে রাম মনে অবিরাম। দীন কাঙালের ধন রাম কৃষ্ণ নাম, দীন কাঙালের ধন রাম কৃষ্ণ নাম। শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম। একই বৃন্দে ফুটিল রে রাধা কৃষ্ণ শ্যাম, একই বৃন্দে ফুটিল রে রাধা কৃষ্ণ শ্যাম। শিব কালী ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্যামা সীতারাম, শিব কালী ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্যামা সীতারাম। শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম। নাম ব্রহ্ম একই জেনে মনে গাবো নাম, নাম ব্রহ্ম একই জেনে মনে গাবো নাম। জন্ম মরণ সাথী রাম কৃষ্ণ নাম, জন্ম মরণ সাথী রাম কৃষ্ণ নাম। শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম। প্রেম ভরে মনের গাবো রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী রাম কৃষ্ণ নাম। প্রেম ভরে মনের গাবো রাম কৃষ্ণ নাম, শ্রী 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 রাম কৃষ্ণ নাম। Need
sincere thanks. Our sincere thanks to all the musicians for creating such a wonderful atmosphere.
of devotion. Please give them a big hand. We continue with our celebrations of the Holy Mother's Day of this annual celebrations of this center. And we now start. I request all the speakers, esteemed speakers, Swami Shantatmanandaji, Swami Tattwamayanandaji and Swami Raghavendranandaji to please come and take their places on the stage. And may I now request Revered Swami Shantatmanandaji to welcome you all. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। A warm welcome to all of you. It is the first annual celebrations of this center. इस center का पहला वार्षिक उत्सव है. So we are trying to formulate system किस तरह का होगा, क्या सबको अच्छा लगेगा, सुविधा भी होगा. So we are trying to experiment. इसलिए आज इवनिंग में कल टुमारो सारा दिन व्यापी सेलिब्रेशंस हम लोग मनाएंगे. नेचुरली बहुत बार भी यही मन से व मंदिर से भी हम लोग बात कर चुके हैं that this center has to develop as a center for intense spiritual sadhana. यहाँ इसे आया कुछ सुना चले गए. It's not for just time pass or for entertainment or anything. इसलिए जैसे हम लोग दिल्ली में करते थे, यहाँ भी जितनी संभव ऐसे कोई सज्जन विद्वत साधु को बुलाएंगे ताकि we get lessons for our life, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ सलाह मिल जाए. So it's going to be that way, very carefully selected speakers. So we have with us two wonderful speakers for this celebration this year. Swami Tattwamayanandaji, who is the Minister in charge of Vedanta Society of Northern California, San Francisco से इतनी दूर से आए Maharaj. So we are extremely happy and grateful. Maharaj is not only a very senior sadhu, he's a great scholar. He's another outstanding Sanskrit scholars of the order. उन्होंने बहुत ही ट्रेडिशनल पद्धति में संस्कृत उन्होंने अध्ययन किया. हम लोग भी इधर उधर कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ट्रांसलेशन से देख लेते हैं, ऐसे नहीं है. Yes, they read it in a very traditional way, and he is well known for his wonderful exposition of Vedantic ideas. लेकिन वो महाराज जी बहुत ही ट्रेडिशनल ढंग से करेंगे. He is not, will not make it in a popular way, सबको जो मनग्राही होगा ऐसा नहीं करेंगे. He is very very clear, and he will speak only the highest truth in a form, in a very traditional manner. ताकि so इसलिए be prepared for a very, आज तो माँ के बारे में इतना ही नहीं, but because we have more occasions to listen to him. So if you really actually, his real forte is his deep exposition of Vedantic ideas, of Vedanta, Shankara Vedanta in particular. Anyway, we may get some glimpses even today and tomorrow, but largely that will be for future occasion.
And then we have with us Raghavendranandaji, a very very popular speaker, well known for his particularly Hindi bhashan. Or I think he's only my younger brother, a very close friend and associate. बहुत ही उनके साथ मेरा मित्रता है. सिर्फ दिल्ली में भी बहुत बार उन्होंने बुलाया. So I thought that we'll catch him at least for the first year, क्योंकि उनका भी अभी नागपुर का उन्होंने अध्यक्षता ग्रहण कर लिया. So naturally is very much in demand, has always been, and it's a very big center, one of the biggest centers in the western part of India. इसलिए ये इतनी विस्तृता के बीच में भी ये दोनों सज्जन यहाँ उपस्थित हुए. They'll be with us for today, this evening as well as tomorrow, the whole day. So आप जैसे मैंने बताया, please take it very seriously. See that we get the best out of such discussions. नहीं तो आजकल YouTube में हजार ऐसे चलता रहता है. सब बोले मैं इतना सुना, कुछ हुआ क्या? स्मरण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधि, श्रवण मनन निधि. श्रवण तो ठीक है. Do we go further? So that's very important. Otherwise, it has become like another kind of mode of entertainment. पहले बहुत ही गाना सुनते थे, सिनेमा की गाना, दूसरी भक्ति संगीत. Like now they are listening to lot of lectures. So actually, it's not necessary to listen so much. कम सुने, लेकिन उसकी ज़्यादा मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें. तब you get the best out of it. Otherwise, to remain only as सुना बोलिए, अब दूसरी सुना, तीसरी सुना, चौथा सुना. Actually, we don't have that kind of capacity to listen to any number of talks unless we are able to spend quite a lot of time deliberating. Actually, बहुत कुछ भी बोलना भी था, लेकिन here programs are all set such a way that you don't miss the Aarti. So by 6:45 we must complete the program so that all of you can, at least as many of you want to attend Aarti. It's at 7. Our Aarti timings are also fixed. Means 6 महीने 7 बजे, 6 महीने 6:30. अभी तो समर का शुरू हो गया. 1st April से it will be 7 p.m. till the 30th of September. So we have to finish. So we are in a hurry. So the topic chosen for today, Holy Mother as a householder. एक गृहिणी के रूप में माँ की हम लोग कैसे देख पा रहे हैं. See, in whichever way we look at mother, जिस तरीके भी उनके बारे में सोचें, समझें, आलोचना करें, आस्वादन करें, to really taste that extraordinary life in as many ways as possible. ताकि हम लोग का we again continue to enjoy it. इसलिए ना बहुत सुंदर एक माँ के बारे में that श्लोका, अनंत रूपिणी, अनंत गुणवती, अनंत नामनी. अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत नाम है. यही माँ के बारे में कहते हैं. So naturally, this is whatever way it's possible to think of her, to talk about her, to remember her, to be in that mood, in that ambience, so that we again and again surrender ourselves as a child of the Divine Mother. That is where our liberation, वहाँ ही हम लोग का सर्वमुक्ति की एक कोई उपाय मिल ही सकता है. There's a very famous incident. Revered में अभी भी वो चल रहा है. Morning, the young brahmacharis they cut vegetables. क्योंकि बहुत सारे लोग की खाना पकाना पड़ता है, इतना सर्वेंट्स कहाँ है. So हर यंग ब्रह्मचारी का बराबरी मान लीजिए 100 साल होगा. इससे ऐसी ड्यूटी है मॉर्निंग नाश्ता की बात. नाश्ता इज ओनली जस्ट बहुत ही सामान्य है. उसके बाद कम से कम 45 मिनट्स or they will cut vegetables. So माँ के एक अनन्य शिष्य स्वामी जगदानंद जी, उनके सब सुनिश्चित थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष. उन्होंने लीला प्रसंग का पहले अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए थे. Was considered extraordinary spiritual giant. वो उन्होंने एक माँ की जीवन की घटना बताया. एक समय ऐसा कोई बहुत धनी घर से कोई लड़का साधु बनने के लिए आया. He had come. So he was a brahmachari, like other brahmacharis, he was cutting vegetables. So उनका पिताजी आए, कितना गुस्सा है, इसके लिए तुम आया? I have brought you a golden instrument for cutting vegetables. बंगला में जो बोटी करने हिंदी में मेरा मालूम नहीं है. They say that they use for cutting vegetables. मैं तो सोने की चीज नहीं देता था. तो इसके लिए आया. So जगदानंद जी लिखने हैं, वो कैसे समझ पाएगा?
हम लोग का उद्देश्य है जिस प्रकार भी हो, सब्जी काट के हो, कैसी हो, माँ की प्रसन्नता लाभ करना है जीवन का उद्देश्य. So how will others understand? So he remarks. So it was not cutting vegetables. Everything is for माँ की प्रीति के लिए, माँ की संतुष्टि करने के लिए, माँ की सेवा के रूप में. That's our attitude. That was Raghavendranandaji Maharaj remarked. So very surprisingly, ठाकुर तो सारा जीवन उनका जीवन में साधन छोड़ के कुछ भी देख नहीं पाएंगे. Throughout his life, it was only the highest peak, then again. So that's how it should oscillate. उस समय तो कुछ भी नहीं था. Then slowly when he had traversed all the paths, then माँ की आदेश से भावमुखी रहने की वजह से sometimes he would come down into, otherwise anytime he would go into samadhi. That was Ramakrishna. स्वामी जी भी हम लोग जानते हैं कितना कठोर तपस्या किया. But mother, always she lived most trying circumstances as a whole, as a householder. माँ की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गृहिणी के रूप में ही हम लोग को मिल रहा है. It was a mystery. What it was, when did she do her sadhana, what it is, why she worshipped. See, माँ के बहुत नजदीक रहते थे, उनका भी पता नहीं चलता. They were also, not really aware of her extraordinary personality, because someone like Yogin Ma was considered a constant companion. माँ के इतनी नजदीकी थी. She was like, for anything, mother would call Yogin. She was very intelligent. जो भी है, अरे Yogin की बोला. That was mother. She was a go-to person, so to say. वो एक दिन सोच रहे थे, अरे ठाकुर कितना त्याग का जीवन था. Oh, the great साधका ही was. माँ तो हमेशा में देखता हूँ राधु राधु करके ऐसे बोल रहे हैं. What is this? So हर रोज वो गंगा जी में ना के ना तट पर बैठ के बहुत समय जप करती थी. That was a daily routine. तो उस दिन स्नान करके बैठी, and suddenly she saw सद्यो जात शिशु. अभी जन्म लिया था, उसका तो देहांत हो गया था. The child completely entwined in नाड़ी पाड़ी एकदम खून से भरा ऐसे एक शरीर गंगा जी में जा रहा है. Saw as being swept by the waters of Ganga, a newborn baby, not alive, entwined in the umbilical cords, etc. So ठाकुर दर्शन लेके बोला, देखो क्या देख रहे हो, उसी से क्या गंगा जी अपवित्र हो गया. माँ के बारे में ऐसे समझो, कभी भी संदेह मत करो कि वो अलग नहीं है. Understand that to be same as this. इतना भी बोला. Not only he said she is a great personality and whatever. Said don't make a difference between this and her. So when Swami Thakur has given that ultimate certificate, we don't have to look beyond that. There is a lot more to say, but I think it's better we listen to these two great speakers to throw light on this wonderful topic. Swami Tattwamayanandaji from San Francisco, and our own Swami Maharaj Raghavendranandaji from Nagpur is the Adhyaksha, Dr. Matna. So, with this introduction, I leave the stage to the speakers. Namaskar. Thank you, Maharaj. I now would request Swami Tattwamayanandaji to address you on today's topic, Holy Mother as a householder. As you all know, Revered Maharaj is the minister in charge of Vedanta Society of Northern California in United States, and he is an erudite scholar of the Shastras. Please, Maharaj. ॐ यथाग्नेदाहि हसक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपं स्तां शारदां प्रणमाम्यहम्. My pranams to Swami Smaranandaji Maharaj, Swami
Raghavendranandaji, and also the Swami who is seated in the audience, Swami Tattwamayanandaji, and also my namaskar to all the friends and devotees who have gathered here as part of this very wonderful, unique celebration of a very unique institution. It is really a matter of pride, blessing and joy to be part of the first anniversary celebration of this institute, which is perhaps the first and only kind of its kind in our organization, which is dedicated to value education and the promotion of spiritual and ethical and moral values in society. So coming to the subject proper, Holy Mother as Solde. Now, very difficult to understand and even talk about Holy Mother, because we have so many scriptures in our tradition. We have the four Vedas, Samhitas, Aranyakas, Brahmanas, Upanishads, 18 Mahapuranas, 18 Upapuranas. Then we have the classics like Ramayana, Mahabharata. A number of saints and sages and incarnations, Ramakrishna, great philosopher, saints and incarnations like Shankaracharya, and a great mystic like Sri Ramakrishna, and again a great intellectual philosopher of our own times like Swami Vivekananda. But we don't have any person in the form of a very, very average, ordinary housewife. Who was not housewife actually. Mother was a sannyasini of the most exalted order, and also a typical mother of a family rolled into one. So somebody who spent all her life cooking, serving, dishwashing, taking care of her relatives, including some of them quite abnormal, Rimaku, Radhu, a mad aunt, and also some of her own relatives who were certainly not very spiritual teachers or spiritual aspirants, who were actually looking for money from her. And she handled all these appalling domestic conditions with a serenity of mind, with the equilibrium of a sage and a yogi, and of course all with the affection of an all-caring mother or grandmother. This was Holy Mother. She was cooking and serving and cutting vegetables and cleaning the place. At the same time, she was also the patron saint of perhaps what is so it's a very unique phenomenon when you talk about Holy Mother. She was herself doing things which Sri Ramakrishna would not have bothered to do. Sri Ramakrishna was always living in a state of ecstasy. Swami Vivekananda was living in the world of scriptural ideas, philosophical ideas. He was concerned about the plight of Indian society, how to give a new life to Indian society, Hindu religion, Sanatana Dharma. That is what he was concerned with, traveling all over the world as the mouthpiece, the voice of Sri Ramakrishna. And Mother was here living in a small hut where she was born, and later in Calcutta, with Gautam, where she was staying to the end of her life as the patron saint, the custodian, the spiritual teacher, the custodian of the Ramakrishna order, which is right now the greatest Hindu monastic order with more than 240 centers scattered all over the world. This is Holy Mother, a great guru, a great guide, a great philosopher in the true sense of the term. Philosophy is called darshanam in Sanskrit. Darshanam is spiritual realization, and not philosophy in the sense of philosophy of Kant or Hegel or anybody. Darshanam in Sanskrit means spiritual realization, and that's what she really was. Now, take her own name, for example. In English, we spell her name as Sarada. We call it Sarada. And also Sharada. As Sarada means Siren Data the Idi Sarada, the one who gives you the highest spiritual wisdom. She is Sarada. Sharada means Sharatkare Pujda Idi Sharada. She is Durga, because autumnal season is when we normally invoke the presence of
goddess Durga image, and we perform Durga Puja. So she was both Sarada. Please pause for a minute. Change the mic. Okay. Okay, I'll just wait for you. So she was Sarada, in fact, the giver of the supreme spiritual wisdom, and she was Sharada, she was Durga. And you know what Durga is, what Durga means in the tradition. Durga is the most exalted concept of divine archetype in world religious life. You cannot, I think there's a problem with this system. And Maharaj said it's our just trial. So, एक माइक आप इसको ऑन कर लीजिए. Take the first one. First one. This one. Sorry about that, but this matter. So, what I was trying to say, Hi, it's fine. what I was trying to say was, Polymatha represents a very unique spiritual phenomenon in the history of world spiritual traditions. You don't find any tradition where a great spiritual phenomenon, a spiritual person, in the form of a mother who was living in a home, but she was not really a married woman in the ordinary sense of the term. She was in a way a sannyasini of the most exalted order and an householder of the most exalted order rolled into one. You know, in India's spiritual tradition, householder, the status of an householder is considered to be the senior most person. Tasmat trayopya sraminu jnaren annena jannadam grihasthena ivadharinde tasmat deshta samismriti. The Manusmriti says that among the Chavirasama, the four asamas, Brahmacharya, Gargasthya, Vanaprastha, Sannyasa, householder is senior most.
Because in the householder who supports the other three orders, brahmacharis, they don't earn wealth and food. They should be fed by householders. Sannyasis, again, they don't earn wealth. They should be supported by householders. Also vanaprasthis. And again, in our own family tradition, the greatest and the most exalted name and figure is mother. Matu Devo Bhava is the first instruction given by an ancient sage in his convocation address that comes with Aitreya, Upanishad, the Krishna Yajurveda. Veda Manucha Acharya Devasena Vanishasti begins a convocation where a student who has completed his Vedic education is going back to his home to start his life as a married person, to play different roles in his family, as husband and brother and so on, is given a set of instructions, not only on spirituality, but also on how to conduct himself in his family setup. Says, your mother should be as respected, as honorable as God himself. That is Matu Deva Bhava. The same Manu and Yajnavalkya also repeats, Upadhyaya Dashacharya Acharya tu Shatanpida. Grihasthe Naivadharinki. So Upadhyaya Dashacharya Acharya tu Shatanpida. A professor should be 10 times as honorable as a lecturer. The father should be 100 Dashacharyas. That means he should be 100 times as respectable as a professor. And then Gauravena Adhya Matugu, Gauravena Adhrichade, sometimes Sahasrena Adhya Matugu. There are two different versions. Sahasrena means a mother should be 1000 times as respectable as father himself. Sahasrena Adhya Matugu, Gauravena Adhrichade. So what it means is, mother is the most sacred name in the family tradition. It is said that in our tradition that no man can be really great without the blessings of a spiritual personality of a mother, or with the support of a spiritual personality in the name of a Pativada, means a chaste wife. A chaste wife or a God-fearing mother are the sources of inspiration for any person to become great in his life. Now, all great spiritual persons have two channels you find, the human and the divine. Look at mother. On the one hand, you find mother was working like an average woman, like a householder. There is an interesting story about this. One day, Holy Mother was taking care of her brother's little girl, Radhu, and also some other small little children she was taking care of. Then one woman devotee came to mother's home and she exclaimed, "Oh mother, you are steeped in your samsara, in the worldly responsibilities." And mother said, "What to do, little girl? This is what I am supposed to do." But then she said, I am myself Maya." She herself said, she is Maya. Of course, the woman didn't understand. So mother, on the one hand, was doing all the household duties. At the same time, she was fully aware of a transcendental spiritual dimension. This is what actually distinguishes a great person, whether Jivanmukta or incarnation, from other human beings. So far as we are concerned, they are engaged in so many different activities. Sometimes we may consider them as worldly activities, but for they are concerned, they are always in a spiritual dimension. They are connected with their spiritual identity, but we are not aware of this. So in the case of Holy Mother, when she detached herself from her worldly obligations, she actually became the mother of the universe. That's called Vasudhaiva Kudumbakam. You know, that's the highest ideal of spiritual tradition. Vasudhaiva Kudumbakam. That means the whole earth is Vasudha Eva Kudumbakam. The entire earth here means humanity is one spiritual family. There is something very interesting about the way mother instructed her own household devotees. That is very striking. You see, once some householders came to mother and they said, "Well, we are doing a lot of spiritual practices, meditation, japa, puja, and so on.
Still we are not realizing God, nothing is happening. Mother told them, look here, do you think that because you are doing a lot of spiritual practices, God should appear before you? As if when you go to market, you pay a credit card modern times, you pay money and you get a bunch of vegetables or anything else for eating. So that means everything depends on God's grace. So you find Mother focuses on Sharanagati or grace, a combination of Kripa and Purusha Prayatna. That is the dynamics of India's Bhakti tradition. If you don't work yourself, if you don't do in the spiritual sadhanas, if you don't meditate, if you don't japa, then what happens? Even if Guru Maharaj himself appears before us, we may think he has come to attend the lecture. On the other hand, when we do spiritual practices, spiritual disciplines, we are elevating ourselves, we become spiritually fit to recognize God's grace as God's grace. Otherwise, we may interpret even God's grace as just an accident. In another context, the opposite of it happened. Another group of householders came to Mother. So they said, Mother, you are doing everything for us. So we don't have to do anything. Then Mother showed the other side of the same coin. She said, see, look at me. I am myself engaged in spiritual sadhanas. And you think without doing anything you can get anything? So you can see this is how a great spiritual teacher teaches. The teacher, the mother of Sri Ramakrishna, comes down to their own level and just takes them to the next step of spirituality. So you find on the one hand, Mother frequently stresses and emphasizes the importance of Saranagati. Saranagati means Anuvilyasa Sankalpaka Pradivilyasa Vardhanam Rakshasiri Vishwasu Goptukta Varanam Datha Atmanikshepa Karpanyesha Vidha Saranagati. Karpanya is the first condition to practice Saranagati or self-surrender. Before that, you should have other 5 disciplines. You should have positive attitude, and you should get rid of all negative thought currents. You should consider God as protector. You should depend upon God alone. So what happens? Then you should have a sense of that you are destitute, you are totally helpless. So when all these qualifications are combined, then what happens? Spirituality becomes real. So Mother on the one hand stresses or emphasizes the importance of Saranagati. At the same time, Mother also tells you to be able to practice Saranagati. To be fit to practice Saranagati, you should make your own effort. There is a old story taken from some other traditions. A farmer was trying to bring water to the field. And the farmer should first of all, make the field ready. A lot of thorns and grass and weeds in the field has to be removed before he brings water to the field. Suppose he brings water for irrigation without first making the field ready. What happens is he will get only weeds and grass, not food grains. So before we actually take up Saranagati or Purusha Prajna, we should make our mind ready. In fact, that is the uniqueness of Holy Mother. In Holy Mother's teaching, you find this unique blending of human effort and also the highest type of importance in Purusha Prayatna. One important thing that I want to mention to you, that is in persons like Holy Mother, sometimes we find they every day, every minute, every activity, they constantly remember the spiritual identity. That we may not be able to recognize. We recognize only when Holy Mother says something. That can be an example. There are 2-3 very important instances. We are coming from the United States. Miss Leggett came to see Holy Mother. She was a Catholic woman. She was standing outside the door of the building where she was living. So now Mother spoke no English. And this American lady also did not know Bengali. Now
you can see when she appeared, she thought mother was her spiritual mother. And when she approached Holy Mother, that lady really literally saw it before her somebody who was her own mother. Now, how did this connection happen? Because beyond the visible connectivity, there is a spiritual connection. The same thing happened to Sister Nivedita. I have to finish quickly because I should not exceed the allotted time. Sister Nivedita came to India. This is much more of a demonstration of the uniqueness of Holy Mother as spiritual personality. Swamiji was a great intellectual. Swamiji was giving lecture in London, Jnana Yoga lectures. And among those who attended the lecture was Miss Margaret Noble, who was an Irish revolutionary, as a dry-hard intellectual. And she decided to come to India. And she decided to offer herself, to surrender herself to the cause of associating with Swamiji first in giving a revival in Indian nation, Indian culture and tradition. But Swamiji was not fully convinced. Here is an Irish lady, and Irish people are very hot-blooded. She was a great idealist. But he decided to take one decision. If mother could accept her, everything would be okay. Swamiji himself was not fully convinced. Because Sister Nivedita used to ask all kinds of questions. And she, the sort of people that was the British time, India was a colony. And she came to Calcutta. The Swami sent her to see Mother, Holy Mother. And here, when Sister Nivedita saw Holy Mother, she literally saw her own biological mother who had passed away. And in front of her, a lady who spoke no English, right from an Orthodox village, a backward village in India, very traditional, very pious kind of lady. And she could see in her own biological mother. And mother addressed her as Cookie, a little girl. Now, remember, if an Aristotle could have given a long talk on spirituality, that won't be enough to convince Sister Nivedita. Swami Vivekananda himself could not really feel comfortable or confident that Sister Nivedita will be able to adjust her footing at home in India, even in Calcutta, in the late 19th century, compared to London, where she was living. It's a very backwards city. But then, in Holy Mother, she did not, Sister Nivedita did not saw Miss Margaret Noble. She did not saw an alien woman. She saw literally her own mother, who passed away long ago. In the case of another American lady who I mentioned earlier, she was a Catholic woman. And it seems that mother asked her to repeat, to narrate the typical Catholic marriage ceremony. Mother had not heard of anything like this. But she repeated this American woman. And then when they narrated the typical Catholic marriage ceremony, mother said so wonderful. Because in Indian tradition, in the Revered 10th mandala, Grinhamite, Sarvadatvaya, there is a Vivaha Sutta. When she thought the Catholic ceremony, the traditional marriage ceremony, as something very wonderful about it. So, mother's love, her appreciation of culture, values, all these transcended beyond the boundaries of nationality, race, culture, religion, anything. This is possible only for a mother, not for even for a father. No offense meant. The reason is, a father may expect you to get a good job, and he can proudly say, my son is a big engineer, CEO of Google or maybe Microsoft or something. But mother may be happy, but for a mother is concerned, whether you are a CEO or you are a very ordinary person, it makes absolutely no difference. Only mother can look beyond differences of status, job, income, or the boundaries of nationality, religion, race, or religion, anything. That is what it is. And I can tell you, I want to conclude here.
working in the US for the last nearly more than 12 years. I can tell you, till 1953, 54, 55, there was no Holy Mother's picture anywhere. Of course, there was one small photo used by Swami Tiriyandaji, but you don't find Mother's picture was not at all very common in the US centers, even maybe not even India perhaps, but much more earlier it started. But now there are women devotees, American, Spanish, even Chinese, who may not know anything about Hinduism. They connect so naturally, so intimately with the mother ideal, that because mother is the only spiritual ideal where you can go straight, you can just bang the room and enter, mother won't mind. So this is a very unique spiritual phenomenon. Any discussion in Holy Mother needs a lot of time. So I have just mentioned only one thing. Mother ideal, Holy Mother's ideal is the most acceptable, the most spiritual, the most intimate spiritual paradigm, spiritual archetype. Feminine archetype in modern world. In today's US, you find also in India, unfortunately, many women are trying to be men. They go to the gymnasium just like men. They have the dress code of men. But actually, women can be far greater, far superior by identifying her own motherhood. Because before a mother, no one can say no. I mentioned earlier, every great man, whether Shankaracharya or Vivekananda or Sri Ramakrishna, take anyone, every great man has got behind him the blessings of a pious mother or the support of a chaste wife, Pativrata or Mata. These are two highest ideals. And mind you, mother actually presents a very unique spiritual feminine archetype before the world. Mother is yet to be discovered. Mother's message is yet to be spread among the world women population. So I'm concluding my talk just now. I'm immensely grateful to Tattwamayanandaji and also to this institute, to this center, for giving me a chance to discuss some points related to Holy Mother's life and teachings. It's an endless story because any talk on Mother is as complex on the one hand as simple. Both the very complexity of Mother's personality itself is based on the essential simplicity. Because Swami Vivekananda can speak very easily. There are 8 volumes, 9 volumes, number of books, philosophy, nationalism, spirituality, and so on. Sri Ramakrishna in the gospel, but Mother, what do you do? Mother's personality itself is the greatest document of Mother's teachings. Thank you, Namaskar. Om Shanti, Shanti, Shanti. महाराज को तो आप काफी आप लोगों में से जानते हैं, महाराज को सुना है इसके पहले। श्रीमद श्रद्धेय राघवेंद्रानंद जी महाराज इस वक्त नागपुर सेंटर के अध्यक्ष हैं और गृहिणी के रूप में श्री मां पर आपको हिंदी में अपने विचार रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन श्रद्धेय श्रीमद स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी तत्वमयानंद जी महाराज, जिनकी वक्तृता भी आपने सुनी। आज का जो विषय महाराज जी ने दिया है, माँ शारदा गृहिणी के रूप में या गृहस्थ के रूप में। जब माँ को गृहस्थ के रूप में विचार करना है तो हमें बहुत सी बातें दूसरे ढंग से सोचनी पड़ती है, और हमें हमारा जो मन माँ के बारे में कहता है, माँ की जीवनी, माँ के जीवन की जो घटनाएं हैं, वो सब देख के श्री राम कृष्ण ने माँ के बारे में जो कुछ कहा है वो कुछ दूसरा बताता है। क्योंकि ये जो शब्द है गृहस्थ, वो गृहस्थ शब्द किसको लागू होता है? हम जब तक एक युवती होती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो एक गृहस्थी में प्रवेश करती है, माने इसका एक पति हो जाता है, इसके ऊपर एक संसार का दायित्व आ जाता है। अब उसका संसार की दृष्टि से विचार करना पड़ता है। फिर धीरे आगे चलकर वो माँ बन जाती है। माँ बन जाने के बाद में उसे अपने बच्चों का लालन पालन करना पड़ता है, बच्चों का सुख देखना पड़ता है। अब जब एक स्त्री, एक युवती, एक नारी जब इस प्रकार संसार में जाती है, और संसार में जाके हम जब कहते हैं कि अरे पहले अच्छा था, घर में थी, अकेली थी, अपने माँ पिता के घर में थी, लेकिन जब वो गृहस्थी में प्रवेश करती है, गृहस्थ बन जाती है, बने उसके साथ एक पति, जो पहले हमारे प्राचीन समय कहते हैं कि पति को देवता मानती थी स्त्री को कुछ करना नहीं है, केवल पति का अनुमोदन करना है, केवल पति का अनुगमन करना है। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उसकी गति भी बड़ी उच्च गति होती है। हमारे यहाँ अनुसुईया, अत्रि का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी अनुसुईया, वो इतनी पति के आदर्श पति को जिस प्रकार मान के चलती थी, और उसी से वो सिद्ध हो गई थी। रामायण में आप लोग देखते हैं, उस अत्रि के ऋषि में अनुसुईया माता ने स्त्री सीता माई जब उनके यहाँ गए, राम जी सीता जब उनके आश्रम में गए अत्रि के, तो दिव्य वस्त्र दे दिए, सीता को दिए थे, और सीता को बड़ा आशीर्वाद भी दिया, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पातिव्रत्य, तीनों लोक में जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक तुम्हारा पातिव्रत्य रहेगा। और ऐसे ये वस्त्र है कि ये कभी भी मैले गंदे नहीं होंगे। इस प्रकार के वस्त्र सीता को अनुसुईया माता ने दिए थे। तो ये सीता और ये अनुसुईया माता कौन है? एक पतिव्रताओं में आदर्श, सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को बालक बना दिया था। इतनी जबरदस्त जिसकी पतिव्रता की सामर्थ्य, जिसका सामर्थ्य था, और वो इस प्रकार की थी। क्या एक अनुसुईया को आप गृहिणी कहेंगे? केवल उसने शादी की है, उसका पति है, और वो अनेक लोगों का पालन पोषण कर रही है, क्योंकि आश्रमों में वे गुरु माता हो जाती है। जब ऋषि पत्नी आश्रम में होती है तो वो गुरु माता कहलाती है। क्या हमारी माँ शारदा, जिसके बारे में जो स्वयं श्री राम कृष्ण बोल गए हैं, वो मेरी शक्ति है, वो शारदा है, सरस्वती है, जीवों को ज्ञान देने के लिए आई है। श्री राम कृष्ण के साथ विवाह तो जरूर होता है उनका। विवाह होके वो जो राम मुखर्जी की बेटी थी, वो गदाधर चटर्जी की पत्नी हो गई, दिखने के लिए उस समय के हिसाब से। लेकिन क्या गदाधर चटर्जी भी वैसे गृहस्थ थे? कोई भी गदाधर चटर्जी बोल देने से पहचानेगा नहीं। लेकिन जब आप ठाकुर कहेंगे, रामकृष्ण भगवान कहेंगे, तो हाँ, पापा कुकुर में उनका जन्म हुआ था, ऐसा कहेंगे। वैसे ही
माँ के बारे में, अरे वो जो एक शारदा रामचंद्र मुखोपाध्याय जानते हो, नहीं समझेगा, जल्दी नहीं समझेगा, क्लिक नहीं करेगा। लेकिन जब रामकृष्ण भावधारा में जब माँ बोल देंगे हम, तो कोई भी समझता है हाँ माँ माने कौन। ये जो इन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया, तो ये कौन थी, ये हम सब जानते हैं, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं सप्तशती में, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, जिसकी प्रसन्नता से जीव मुक्त हो जाता है। अभी महाराज ने जब भी उदाहरण दिया कि उसको, उस माता को, उस शक्ति को कैसे प्रसन्न करना, ये दूसरी बात है, तुम किसी भी तरह से प्रयत्न कर सकते हो, वो आलू छील के भी प्रसन्न हो जाती है। वही महाराज ने घटना बताई। ये जो है शिव और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति एक है, शक्ति स्वरूपिणी, और जिसके बारे में श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हृदु तू इसको गाली दे, इसको कुछ भी कह ले, मैं कुछ नहीं मन पर लूंगा, छोड़ दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, उसको कुछ गाली मत देना, उसके बारे में कुछ मत कहना। वो अगर नाराज हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुझे बचा नहीं सकेंगे, मैं भी नहीं बचा सकूंगा। क्यों? क्योंकि श्री राम कृष्ण जानते थे, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिसकी बात हुई है, जिस शक्ति के बारे में बोला है, जिस परमा प्रकृति के बारे में बोला है, वो परमा प्रकृति वो है। और माँ ने स्वयं अपने मुख से बोल दिया था कि हाँ मैं परमा प्रकृति हूं। और हमारे अभेदानंद जी ने इसीलिए प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, ये जो श्लोक रचना की इसीलिए की, क्योंकि उन्होंने जब सुना कि शारदा प्रसन्न महाराज को माँ ने स्वयं कहा था हाँ मैं ही परमा प्रकृति हूँ, वे खुद गए, माँ से पूछा, माँ आपने उनको ऐसा कहा? माँ ने कहा हाँ। तब उनका विश्वास हो गया, और वो 7 दिन ध्यान में बैठे रहे। वो बलराम वरानगर मठ में दूसरा था मठ, आलम बाजार मठ में 7 दिन एक कमरे में बंद कर लिया उन्होंने, और ध्यान करके माँ का वो स्तोत्र लिखा। और माँ का ये स्तोत्र नीलांबर बाबू गार्डन में उसमें माँ रहती थी, तब वहां जाके माँ को सुनाया। और जब कहते हैं कि जब माँ को स्तोत्र सुनाया, और उसमें जो आता है एक तद्भाव रंजिताकाराम जगन्मातृ स्वरूपिणी प्रणमामि मुहुर्मुहुः, तो तद्भाव रंजिताकारा माने माँ किसके भाव में रंजित है? माँ ठाकुर के भाव में ही रंजित है। ठाकुर का भाव क्या है? ठाकुर कौन है? ठाकुर वही परब्रह्म है। बाबूराम महाराज ने ठाकुर को पूछा था आप कौन हैं? तो बोले मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये वो ठाकुर जो ब्रह्म है, वो उनकी शक्ति, तो वो ब्रह्म शक्ति ही होनी चाहिए, वो शक्ति ही थी। इसकी श्री रामकृष्ण ने कहा, जिनको प्रणाम करने के लिए स्वामी विवेकानंद गंगा में 2-3 बार डुबकी लगाकर भीगे वस्त्रों से जाते थे और दंडवत प्रणाम करके लेटे रहते थे, और जब तक माँ वो कहती नहीं थी बेटा नरेंद्र उठो, तब तक उठते नहीं थे। वो कौन थी? वो क्या शादी हो गई एक माँ शब्द से जिसने अपनी पहचान व्यक्त की, क्या इसलिए उसको हम हमारे सामान्य शब्दों का अर्थ जैसा होता है गृहस्थी बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी माँ ने जो आदर्श जी के दिखाया, जिस प्रकार जीवन दिखाया, व्यावहारिक जीवन में हमें उसे बोलना पड़ेगा कि माँ ने एक आदर्श गृहिणी का जीवन दिखाया, एक आदर्श कन्या का जीवन दिखाया, एक आदर्श पत्नी का जीवन दिखाया। अब ये सब गृहस्थाश्रम से लगे हुए शब्द है। गृहस्थाश्रम में इन शब्दों का प्रयोग होता है, पत्नी, कन्या। तो ये मां शारदा इसलिए गृहिणी कभी नहीं थी, हाँ लेकिन जरूर गृहिणी थी। कैसे? माँ क्या कहती थी? बेटा मैं सबकी माँ हूं, सभी मनुष्यों की माँ हूं। माता जिसको हम कहते कि एक
कुटुंब में एक साधु के साथ ऐसा हुआ था। जब एक वो साधु बच्चे थे, माँ के पास गए थे उद्बोधन में, और पता है कि फलानी फलानी स्त्री का बेटा प्रणाम करने के लिए आ रहा है आपको। तो गया, तो बच्चा था 10-12 साल का, तो माँ ने अपना घूंघट हटा दिया था। माँ सामान्यतः अपने एक घूंघट में रहती थी, एक चादर ओढ़ के रहती थी। जब वो बच्चा गया, 10-12 साल का बच्चा था, उसने माँ को प्रणाम किया। तो माँ ने प्रणाम किया, अरे तुम आए हो, बैठो बैठो, तुम्हें प्रसाद देती हूँ, ये सब कहा। उसके बाद में तो वो बच्चा पूछता है, माँ तुम कैसी माँ हो? सब लोग तुमको माँ माँ कहते हैं, तुम मेरी वास्तविक माँ हो? मेरी माँ तो मेरे साथ आई है, नीचे बैठी है, शारदानंद महाराज के साथ बातें कर रही है। तो माँ ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे माँ की भी माँ हूँ और तुम्हारे माँ की भी माँ हूँ। उनकी जो नानी उनके घर में रहती थी, तो बोले उनकी भी माँ हूँ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सबकी माँ कैसे हो सकती हो? तो माँ ने कहा, बेटा जितने भी जीव है उन सब की माँ हूँ, तुम मुझे इस देह की दृष्टि से मत देखो, ये शारदा इस देह के रूप से मुझे मत देखो। मैं वो शक्ति हूँ जिसी ने पूरे नाम रूप को व्यक्त किया है, इस रूप में मैं माँ हूँ। इसलिए माँ कहते हैं मैं अच्छे की माँ हूँ, बुरे की माँ हूँ, जो भी है। जो मुझे माँ नहीं कहेगा वो बड़ा दुख पाएगा। दुख पाएगा माने माँ किसी को शाप भी नहीं दे सकती थी। अगर माँ को माँ नहीं माने तो बच्चे को दुखी होना है, क्योंकि सबसे पहले हर जीवन में जगत में हमें सुख देने वाली व्यक्ति अगर कोई है हम सबके लिए, तो वो माँ ही है। बच्चे को स्पर्श सबसे पहले समझता है, वो अपनी माँ का ही स्पर्श समझता है। तो इसी दृष्टि से ये जगन मातृ स्वरूपिणी, ये जो कहा जाता है हमारी माँ को, माँ शारदा को, इस दृष्टि से भी माँ ये एक बहुत बड़ा संसार है, सभी संसारी है यहाँ। ये संसार के अर्थ से ही हम गृहस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। माँ ने कहा है ये इस प्रकार एक मातृभाव का प्रदर्शन करना, संसार में रहकर, संसार का तात्पर्य क्या है? माँ ऐसे वातावरण में रही जहां जिसको संसारी संबंध होते हैं, संसारी संबंधों के बीच माँ रही। माँ की माँ थी श्यामा सुंदरी देवी, उनका अपना एक संसार था। माँ उनके घर में बहुत समय तक रही। उसमें माँ के दूसरे 2-3 भाई थे। माँ की माँ जो श्यामा सुंदरी देवी थी, उनका भी एक अपना अलग भाव था। उसे हमेशा दुख लगता था, दुख होता था कि मैंने मेरी बेटी की शादी कैसे पागल के साथ कर दी, जो ना कुछ कमाता है धमाता है, मेरी शारदा को कुछ सुख नहीं दे सकता, जो मेरी शारदा को माँ शब्द भी सुनने नहीं देगा कभी। इस प्रकार बोल के वो हमेशा अपने दामाद की निंदा करती थी। शारदा के सामने भी बहुत बार बोलती थी कि कैसे दामाद को मैंने मेरी बेटी ब्याही है, मेरी शारदा को कभी माँ शब्द भी सुनने नहीं मिलेगा। और जब एक बार ये श्री राम कृष्ण उनके घर गए थे, और जब श्री राम कृष्ण ने सुन लिया अपने सासू माँ का शब्द, तो ठाकुर उनके पास जाके बोलते, तुम्हारी बेटी को इतने बच्चे देके जाऊंगा कि माँ 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 शब्द सुनते उनके कान कीट जाएंगे, माने ऊब जाएंगे, भर जाएंगे कान। इतने बच्चे उन्हें माँ 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 करके बुलाएंगे। अब देखो ये भी जो एक खेल है ना, ये गृहस्थाश्रम में होता है। गृहस्थों में अगर घर में बालक नहीं आए तो बड़े नाराज, सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? कि अरे लोग माँ नहीं कहेंगे, अब घर कैसे चलेगा, बिना बच्चे का घर कैसे हो सकता है। माँ हम देखते हैं कि ये जो गृहस्थी की छोटी छोटी बातें सब समझ के, जगन माता है, साक्षात शक्ति स्वरूपिणी है, लेकिन गृहस्थों के जीवन में किसने कैसे रहना चाहिए, किसने क्या सोचना चाहिए, किसने कहा कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये माँ शारदा जानती है। जितना परफेक्ट माँ शारदा जानती थी, और जो माँ अपने जो उपदेश करती थी, बेटा जिसको जैसा उसको वैसा, जहां जैसा वहां वैसा, जेखाने जेमुन शेखाने तेमुन, जाके जेमुन ताके तेमुन, जोखन जेमुन तकन तेमुन।
ये जो माँ ने उपदेश किया है, ये देखो, जब तक तुम संसार में नहीं डूबते और इधर ऐसा किया तो इधर गड़बड़ होती है, इधर ऐसा थोड़ा ऐसा कहा तो इधर गड़बड़ होती है। संसार में सबको सुख देना कभी पॉसिबल नहीं है, एक साथ सबको सुखी करना कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरे को दुखी किए बिना इसको सुखी नहीं किया जा सकता। ये जो संसार में होता है, माँ ने ये बैलेंस बहुत ऐसे ढंग से चलाया था, ऐसे तरीके से माँ ने इसको समझा था। माँ के घर की बच्चियां नलिनी, माकू, राधु और सब, इनको जो चीजें चाहिए वो लाने के लिए एक साधु को बताए। कलकत्ते में जाओगे, कलकत्ते से आने के समय राधु, माकू, नलिनी और कौन बच्चे होंगे, उनके लिए ये लाना है। तो किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई नहीं, वो नहीं लाऊंगा, वो विदेशी है, विदेशी माल मैं नहीं लाऊंगा। वो जरा अपने उस समय चल रही थी ना, मूवमेंट चल रही थी ना अपने देश की, स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी माल के लिए तो माँ ने कहा नहीं बेटा, वो जैसा बोलती है वैसा ही लाओ। और उसके मन में थोड़ा भाव, मन ऊंचा उठाने के लिए क्या बोलती है, वो भी मेरे बेटे हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन माँ ने इसमें किया क्या है, वो अपने घर की जो बच्चे थे उनको खुश किया है, उनको आनंद दिया है। सबका मन उस समय अंग्रेजों को माँ के बच्चे नहीं मान सकता था। आज भी वो माँ है, आज भी सभी हमारे भाई है, लेकिन क्या हम मान सकते हैं सबको? हमारे मन में धर्म को लेकर, अवस्था को लेकर कितने भेद है, हम सबको बोल नहीं सकते एक ही परमात्मा के सब है बेटे। स्वामी जी ने ये भाव पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में सबके हृदय में घुसा दिया था, टच किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोल के। क्या सबको अनुभव हुआ कि अरे हम सब एक पिता के बच्चे हैं, एक माता के बच्चे हैं, आपस में हम सब भाई भाई है, भाई है, बहन है। जब हमारा सामने वाले व्यक्ति के प्रति जो जैसा भाव होता है, माँ ने तेलो भेलो में वो जो बागदी बड़ा आदमी है सामने आया, रात के समय अकेली थी माँ, हाथ पकड़ के बोला बाबा मैं आपकी बेटी शारदा हूं, आपके दामाद दक्षिणेश्वर में रहते हैं। वो बागदी को लगा ये मेरी बेटी है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। ये इस प्रकार के जो वो माँ का जो भतीजा था शिबू, शिवलाल, शिवराम, माँ उसको साथ लेके जा रही है, माँ आगे चल रही, शिवराम पीछे चल रहा है। शिबू को याद आया, सब लोग कहते हैं माँ को देवी मानते हैं, कोई भगवती बोलता है, कोई काली बोलता है, कोई दुर्गा बोलता है। मैं तो माँ की इतना करीबी हूँ, मुझे माँ ने कभी ऐसा कुछ बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं, मैं कैसे कहूँ? अचानक मन में आया, बोलता है, रुक गए, नहीं गए। माँ ने देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा। अरे शिबू, कहाँ तुम, रुक क्यों गए? तुम कौन हो? माँ को पूछता है शिबू, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे तुम्हारी चाची, तुम्हारी काकी। तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। फिर बोलती है माँ, अरे शिबू चलो, पहले तुम कौन हो बताओ। माँ बोलती मैं और कौन हूं, मैं अब तुम्हारी काकी हूं। तो फिर जाओ। जब देखा कि ये तो अड़ गया है, जाएगा नहीं, तब माँ बोलती है हाँ, लोग मुझे काली कहते हैं, तो तुम काली हो? हाँ। अब शिव चलने लगा उनके पीछे। अब देखो ये विशिष्ट संबंध, इस प्रकार के संबंध, इस प्रकार के हमारा एक दूसरे के साथ लेना देना या अटैचमेंट्स आती है ना, ये गृहस्थी में आती है। माँ गृहस्थाश्रम में जरूर थी देखने के लिए, लेकिन माँ के अंदर एक गृहस्थी के लिए एक जो आसक्ति होती है वो कभी नहीं थी। गृहस्थी में आसक्ति किए बिना गृहस्थी नहीं हो सकती। घर की माँ अगर जोड़ने वाली नहीं होगी, तोड़ने वाली और बिखेरने वाली होगी, तो वो घर नहीं बन सकता कभी। करके माँ को बहुत संभाल के चलना पड़ता है, सब देख के रहना पड़ता है, सबकी मर्जी संभालनी पड़ती है, तब घर बंधा रहता है, घर घर बनता है। बिना माँ के घर घर नहीं बनता। घर को घर कहते तब जब माँ है घर में, क्योंकि वो सबको अपना मान के करती है। ठाकुर ने उदाहरण दिया है,
कि घर की बहू सबको अपना कहती है, सबकी सेवा करती है, सबके मन अनुसार वो अपना बर्ताव रखती है। पति के साथ अलग उसका एक विशेष संबंध होता है, पति उसका अपना होता है, उसके लिए उसने अपने माँ का घर छोड़ के ये घर में वो आती है, लेकिन वो सबके साथ अपने को बांध के रखती है। इसको गृहस्थी कहते हैं। गृहस्थी में ये सब बातें होती है। हम माँ के जीवन में यही सब गृहस्थी की बातें ऐसे अद्भुत देखते हैं कि कौन से बने, बहुत ही कम, इक्का दुक्का कहीं होगी भी, लेकिन माँ जिस प्रकार ये बातें सब निभाती है अपनी माँ की खुशी के लिए, माँ समझकर, माँ मानकर, कामार पुकुर में इतने दुख में दिन बिताने के बाद जब कामार पुकुर कलकत्ते से लोग आते हैं, योगिन माँ, गोलाब माँ, गौरी माँ, मास्टर महाशय, योगेन महाराज, लाटू महाराज माँ को ले जाने के लिए, क्योंकि माँ की अवस्था बड़ी खराब थी। कामार पुकुर में 1 साल जब तक माँ रही, बहुत दुख में रही, कष्ट में रही। जब पता चला वो स्वामी जी को माँ के भाई से, अभय चंद्र से, तब स्वामी जी ने कहा हमने बहुत गलती कर दी, बहुत भूल हो गई हमसे, हमने माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। माँ ने एक शब्द से किसी को बताया नहीं, ना अपनी जन्मदात्री वो जो श्यामा सुंदरी थी उनको भी नहीं कहा, और उस समय कामार पुकुर के घर में भी बहुत दारिद्र्य था, किसी को कुछ नहीं कहा, जैसा मिला वैसा चला लेती थी। कष्ट में केवल वो प्रसन्नमयी जो लाहा थी उनको थोड़ा कुछ बोलती थी और माँ का गुजारा होता था, बाकी घर में भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इसके बारे में माँ ने कभी कुछ कहा नहीं, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया माँ ने। ये लोग जब लेने के लिए आए तो प्रसन्नमयी से पूछने गई माँ कि क्या मैं जाऊं कलकत्ते, ये लोग लेने आए हैं मुझे। प्रसन्नमयी ने कहा हाँ जाओ, वे तुम्हारे पुत्र जैसे है, तुम उनकी गुरुमाता होती हो, तुम्हें लेने आए, जाओ तुम। इसके बाद माँ कहती है इनको कि मुझे जयराम वाटी जाके मेरी माँ को बताना पड़ेगा, माँ का अनुमोदन लेना पड़ेगा। माँ ने ये भी किया, जयराम वाटी गई, 2-4-5 दिन रह के श्यामा सुंदरी को बताया और इन लोगों के साथ कलकत्ता आई। ये जो गृहस्थी के नियम, गृहस्थी में सबको संतुष्ट करके रहना, ये माँ ने किया है। ऐसा नहीं देखो मेरे इतने बच्चे आ गए कलकत्ते से, बड़े बड़े सब आ गए, अब मुझे बढ़िया रखेंगे। और माँ सामान्य स्त्री नहीं थी, माँ एक असामान्य दिव्य शक्ति थी। अब असामान्य दिव्य शक्ति होने के कारण ही ये सब कुछ गृहस्थी में सब कुछ ठीक से निभा सकी। गृहस्थी में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। गृहस्थी में पैसे की एक कीमत, एक वैल्यू है। बिना पैसे का संसार नहीं चलता, बिना पैसे की गृहस्थी नहीं होती। हमारे रामकृष्ण ये भावधारा में एक माँ की गृहस्थी अलग गृहस्थी दिखती है और दूसरी गृहस्थी अलग दिखाने वाले नाग महाशय थे, जिन्होंने कभी पैसा या व्यवहार को कीमत ही नहीं दी। कोई कीमत नहीं व्यवहार को, कोई कीमत नहीं पैसे को, केवल ईश्वर 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 भाव में लीन रहना। और माँ ईश्वर भाव क्या, हमेशा माँ जब कुछ सामने नहीं है तो माँ समाधि में रहती थी। बहुत सी किताबों में ये बातें मिलती है, जब पास कोई नहीं है तो माँ का स्वाभाविक मन समाधि अवस्था में चला जाता था। ये माँ की अवस्था, मन की अवस्था थी। माँ जब 12 साल की थी कामार पुकुर में आई थी, ठाकुर आए थे, माँ को जयराम वाटी से बुला लिया था कि ठाकुर आए हैं तुम भी आ जाओ। ठाकुर ने उसी समय माँ को बहुत सी बातें बताई थी, एक छोटी कन्या बोल के, बाद में लगेगा करके, वो या दिखाने के लिए, सबको समझाने के लिए। लेकिन दोपहर को जब वहां स्त्रियां आती थी और उनके साथ ठाकुर संकीर्तन करते थे या कुछ ईश्वरीय बातें करते थे, तो देखा जाता था ये 12 साल की शारदा सो जाती थी। शारदा सो जाती थी तो कोई बोलता था अरे सारू, वो देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहा है गदाधर, और तुम सो रही हो। ठाकुर क्या बोलते थे? ठाकुर बोलते थे उसको सोने दो, ये उसके लिए बातें नहीं है, तुम्हारे लिए बातें। उसको आवश्यकता भी नहीं है बातों की,
उसको सोने दो, वो अगर जग गई तो उड़ जाएगी, देह नहीं रखेगी। और ये बात हम देखते हैं ठाकुर जाने के बाद, जब माँ हमेशा समाधि में रहती थी, उसको माँ को शरीर में रहने की आवश्यकता ही नहीं अनुभव होती थी। तब ठाकुर ने आके कहा नहीं, तुम्हें बहुत काम करना है। ये जो श्री रामकृष्ण का आगमन हुआ, जिसको भी आज रामकृष्ण संघ बन गया, रामकृष्ण भावधारा कहते हैं हम, फिर रामकृष्ण भावधारा में, रामकृष्ण संघ में हम रामकृष्ण के संतानों की देखभाल के लिए माँ का भी योगदान था। ठाकुर कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, आपको बहुत करना है। इसके लिए ये रामकृष्ण संघ, ये भी एक प्रकार का संसार है। ये रामकृष्ण संघ, सबको लेके साथ चलना, इसमें सन्यासियों का भी महत्व है। हमारा संघ है, हमारे लिए संघ माने सब स्वीकारना पड़ता है, प्रेसिडेंट महाराज से लेकर बेलूर मठ को पूरा, और फिर बाद में हमारा इंडिपेंडेंट सेंटर होता है, उसमें भी बहुत लोग रहते हैं। ये सब को लेकर हमारा संसार है, इसको लेकर हमें चलना पड़ता है। तो ठाकुर ने कहा था तुम्हें बहुत कुछ करना इसके लिए। और माँ कहती थी मैं कैसे, क्या लेके शरीर धारण करूं, शरीर को कैसे रखूं, शरीर में मन रहता ही नहीं, शरीर में मन नहीं रहता। सामान्य मन लोगों का, हम लोगों का मन शरीर से उठता नहीं है, शरीर के ऊपर हमारा मन नहीं होता, और माँ का मन शरीर में नहीं आता। ये विडंबना है, ये विडंबना है। ये माँ थी। और फिर माँ श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, श्री रामकृष्ण दिव्य रूप में आविर्भूत हुए माँ के सामने। और राधु जो 1 साल की थी, और वो पगली मामी अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ रही थी रोते रोते। माँ ने, ठाकुर ने माँ से कहा इसका आश्रय लेकर शरीर धारण रखो, शरीर में रहो, अपना काम करो। और ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये योग माया है। राधु का आचरण अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा राधु सामान्य लड़की नहीं थी, असामान्य थी, असामान्य थी। इसीलिए उसने माँ को असाधारण कष्ट दिया। माँ को साधारण कष्ट नहीं दिया, असाधारण कष्ट दिया माँ को। क्यों? क्योंकि उसका नेचर वैसा था, वो योग माया थी, सामान्य स्त्री नहीं थी। इसलिए उसका सब कुछ व्यवहार अबव एवरेज, अबव नॉर्मल था। वो नॉर्मल एक व्यवहार नहीं था, उसके ऊपर का था, जो सहन करना केवल माँ शारदा को ही पॉसिबल था। माँ शारदा के सिवा कोई नहीं झेल सकता था राधु को। पागल हो जाता, उसको मारता या खुद भग जाता, आत्महत्या कर लेता। लेकिन माँ शारदा ने राधु को सहन किया, किस लिए? ये पूरे संघ को चलाने के लिए। पूरे संसार में कितने लोग माँ से आश्रय लेने के लिए, माँ की कृपा पाने के लिए, माँ माँ करके अपने जीवन को दूसरी दिशा देने के लिए आए थे, आने वाले थे। आज हम लोग आए हैं, और आज भी माँ का स्थान, माँ की शक्ति वही काम कर रही है, हम सबको संभाल रही है। माँ की शरण में जाओ, सुनती है माँ। तो ये जो बातें हैं, 2-3 साल पहले मैंने एक घटना बताई थी। वो मैंने अभी जब नागपुर में मेरा पोस्टिंग हुआ तो वो डॉक्टर मुझे मिली थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हारी घटना मैंने दूसरे से सुनी थी, वास्तविक सत्य है? हाँ महाराज, वो आई थी। मैंने उसको फिर दिया, पैसे दिया, ट्रीटमेंट दी, वो ठीक भी हो गई। लेकिन हमको बहुत आनंद हुआ कि माँ ने हमको अपनी बेटी बोला। ये उस लड़की ने बताया, स्किन स्पेशलिस्ट है वो, उसको एक्चुअली ये हो गया था, लेप्रेसी का शुरुआत हो गया था, उसके लिए माँ ने बोला था। मैंने वो माँ आज भी काम कर रही है, ये माँ की आवश्यकता थी। तो विशेष करके माँ केवल अपने, जिसको हम कहते हैं कि भाइयों की बेटियां, अपने कुटुंब में चक्रवर्ती फैमिली जो थी इनकी, इनको संभालने, रामलाल दादा या शिवराम या और 2-4 थे, उनको देखने की नहीं। माँ ऐसी एक गृहस्थ, असामान्य गृहस्थ थी। जब माँ जयराम वाटी में थी, एक बार किसी कामार पुकुर से कोई 2 साधु आए,
और वहां का माँ ने हाल पूछा, सब ठीक तो है? माँ ने कहा, उन साधु ने कहा, माँ मुझे शरद महाराज ने भेजा था कि वो उधर बात करने के लिए कि ठाकुर का मंदिर होगा कामरपुकुर में, तो मंदिर के लिए ठाकुर के जन्म स्थान की जमीन लगेगी, घर लगेगा, उसको लेकर उनको भी बहुत पैसा दिया गया था। कामरपुकुर में शिबू दादा के जो माने रामेश्वर के जो बेटे थे उनको और बाकी लोग जो थे, तो ठाकुर का घर देने के लिए भी इन लोगों में थोड़ी हाँ ना चल रही थी, पैसे को लेकर। सुनने को अच्छा नहीं लगता लेकिन ये सत्य है, हम अभी पढ़ते हैं किताबों में। तो जब माँ को ये बात बताई गई, वो साधु ने बताई कि शरद महाराज बोलते थे उनको बता के रखो, और ऐसे उनको जो भी लगता है वो उतना दे देंगे, उनको कुछ कमी नहीं होगा, उनके लिए दूसरी जमीन लगी, उनके दूसरे घर बन जाएंगे, लेकिन ठाकुर का जो एक क्षेत्र है वहाँ ठाकुर का मंदिर बनेगा और वहाँ ये वो राम माने सन्यासियों के हाथ में रहेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। तो उसके लिए जो कुछ करना है, शरद महाराज तो 5 की जगह 500 रुपए देते थे, तब भी कभी कभी इन लोगों का पेट नहीं भरता था। तो ऐसे समय में भी माँ ने जब ये बातें सुनी तो उस साधु ने कहा, तो क्या माँ वहां ठाकुर का मंदिर नहीं बनेगा? तो माँ ने एकदम, माँ के अंदर वो अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप की एकदम जागृति हो गई। तो माँ एकदम हंसने लगी जोर से, और वहां वो अपूर्वानंद जी की किताब में लिखा है, अपूर्वानंद जी ने लिखा है, माँ इतने जोर से ठहाका मार के हंसने लगी, सब लोग देखते रह गए, हा करके हंसने लगे। और फिर माँ ने बोल दिया एकदम, सब शमशान हो जाएगा, सब श्मशान बन जाएगा, सब राख हो जाएगा। तो फिर माँ को शांत करने के लिए इन लोगों को माँ की स्तुति करने हाथ बढ़े, सब डर गए थे। क्यों? उन लोगों का श्री राम कृष्ण देव को नहीं पहचानना और पैसे को या तू मैं को लेकर ये जो खेल करना और उनको सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, ऐसा माँ ने जो किया उससे सब लोग डर गए थे। लेकिन बहुत जल्दी माँ शांत हो गई और बोलने लगी, क्यों नहीं होगा, ठाकुर का मंदिर वहीं पर होगा। बाद में सब हो गया, लेना देना जो भी हुआ। माँ ने उसी प्रकार जयराम वाटी में भी काली मामा, वरदा मामा, अभय तो नहीं थे, राधु थी, लेकिन इन लोगों को मुंह मांगे जमीन का दाम देकर शरद महाराज ने जमीन ली थी। और माँ को मालूम था, माँ को सब मालूम था। किसी सन्यासी ने पूछा, रूपानंद जी ने बोला था माँ को कि माँ देखो ये कैसे, माँ कहाँ आप और ये कैसे मामा लोग कितने लालची है। तो माँ बोलती है वो इसी के लिए आए हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। माँ ने कुछ नहीं, माँ ने माँ की अनुमति से ही, और शरद महाराज भी जानते थे। अब ये सब माँ ने होने दिया, क्यों? क्योंकि माँ किसी की बहन है, माँ किसी की बेटी है, और माँ इसके पीछे एक संग जननी है, एक विशिष्ट ये रामकृष्ण भाव धारा जो अभी आई है, शुरू हुई है, इस भाव धारा की माँ है। माँ सब जानती थी। इस रूप से भी हम देखते हैं कि माँ एक अलौकिक गृहिणी थी। अरूपानंद जी माँ को बोलते, माँ ये पगली मामी आपको जो सो कहती है, कुछ भी बोलती है। ये नलिनी और माँ को ये जो भतीजिया थी, कभी कभी माँ को उठपटांग कुछ भी बोल देती थी, उनको लगता था अपनी बुआ है। तो माँ वो तो गलत नहीं बोलती थी, लेकिन जिद करती थी और मानती नहीं थी। और पगली मामी और राधु गालियां भी देती थी। राधु ने तो मारने का भी प्रयास किया था 1-2 बार माँ को। माँ आप कैसे सहन करती है? वो राधु की माँ देखो कैसे कैसे शब्द बोल रही है आपको, और आप कैसे सहन करती है? माँ क्या बोलती है? माँ कहती है क्या है, मैं कहती हूँ एक शब्द मात्र तो है, कुछ शब्द है, गाली नहीं। माँ ने गाली नहीं बोला उसको। ये जो शब्द निकलते हैं मुंह से, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आवाज है, वो एक ध्वनि है, ध्वनि, साउंड जो मोबाइल में हम सुनते, वो तो जो टेक्नोलॉजी से क्या होता है,
हमारे जो ध्वनि आती है उधर से उसको एक टेक्नोलॉजी से हम उसको एक वाइब्रेशन मोड में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वो हमारे कान तक सुनाई था। उसने गलत बात कही तो गलत बात को भी वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म करके हमको सुनाता है। अच्छी बात कही, सीताराम 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 बोला तो वो भी वो फिर से वो उसको अलग वो मैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके हमको सुना देती है वॉइस फॉर्म में। माने वो शब्द ही है, उसका केवल एक टेक्निकल ऐसा होता है। माँ ये जानती थी, माँ ने कहा बोला तो बोला, एक शब्द मात्र तो है, इसलिए मैं मन पर नहीं लेती। ये क्या सामान्य गृहिणी का काम था? नहीं। लेकिन माँ गृहिणी वाले परिवेश में रहती थी, गृहस्थी वाले परिवेश में रहती थी। राधु की शादी माँ ने कैसी की? एक सगी माँ भी अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करेगी, इतनी जबरदस्त। और प्रभु ने शारदानंद जी जैसा सेवक माँ को दिया था, जिसने पूरी जिम्मेदारी अपनी मान के राधु की शादी जो की, सबको खुश कर दिया। माँ को खुश कर दिया, उसके ससुराल वाले को खुश कर दिया और राधु को विशेष खुश किया। ये सब गृहस्थी के काम है। और फिर माँ की दयालुता, माँ की करुणा, माँ सबको सहन करना, उसके तो बहुत उदाहरण है। किसी को माँ ने कभी गलत नहीं कहा, आ बेटा हुआ सो हुआ, छोड़ दे, आज से अच्छी हो जा, बस ये कहती थी माँ। किसी का दोष नहीं देखती थी, किसी को खराब नहीं समझती थी। क्यों? क्योंकि माँ को मालूम था कि मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है। यहाँ कोई भी जो कोई भी है वो कौन है, आखिर उसके अंदर चलाने वाली कौन है? मैं ही तो हूँ। माँ का जब शरीर शांत हुआ, बेलूर मठ में माँ का शरीर लाया गया, पार्थिव शरीर, और उसको अग्नि दिया गया। जब उसके बाद माँ के पास रोज उद्बोधन में जाने वाले लोग जब गए और बोले महाराज अब माँ नहीं है तो हम क्या लेके रहेंगे, कैसे जिएंगे? तो महापुरुष महाराज बोले अरे माँ गई कहाँ? माँ अब तुम्हारे हृदय में रहेगी। वो तो शक्ति है, आज तक वो बाहर का एक रूप लेकर हमारे सामने थी, अब उसको वो बाह्य स्थूल रूप उन्होंने छोड़ दिया, अब वो हमारे हृदय में है सबके। आप हृदय में उसको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार सुनेगी। वो जाने वाली माँ नहीं है, वो रहने वाली माँ है। ये हमारी रहने वाली माँ इस प्रकार की, इसको हम कुछ भी बोले, गुरु माता कहे, संग जननी कहे, गुरु कहे, या गृहिणी के रूप में बोले, माँ ही वैसी है। और सब जगह सब रोल में माँ ने अपना कर्तव्य और आइडियल हमेशा सही दिखाया है। और क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि वो तो जननी है, जगत जननी, जगत की सृष्टि करने वाली जगत जननी। तो वो उस दृष्टि से, अगर हम लौकिक दृष्टि से, हमारे व्यवहारिक रूप से उसको माँ को गृहिणी बोलते हैं तो ठीक है, माँ वैसी भी गृहिणी है, हम सबसे ऊपर है। जैसे गृहिणी हम कोई बन नहीं सकते, हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर कोई नहीं बन सकेगा, ऐसा गृहिणी रूप। इतना बड़ा संघ चलाया, इतने बड़े विवेकानंद जी जैसे को उसने संभाला। नरेन, ये बेलूर मठ की जमीन तुम्हारी है जिसको तुम बेचने निकले हो, ये ठाकुर की जमीन है, आने वाले लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है, नहीं बेचने दिया। इतनी दूरदृष्टि है, इतनी बड़ी समझ है, इतने बड़े संसार की माँ है, इतने बड़े संसार में गृहस्थी चलाने वाली माँ शारदा है करके, माँ शारदा की गृहस्थी रूप से भी अगर हम समझे तो भी हमारा मन विशाल हो जाएगा। ये सब बातों से होता क्या है? जितना हम इन बातों पर सोचते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, हमारा मन विशाल हो जाता है। पवित्रम चरितम यस्या पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै दिव्यै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Dhanyavad Maharaj. Before we end today's session, I request Revered Swami Tattwamayanandaji to present his concluding remarks. ओम एताग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्या स्वरूपां तं शारदां प्रणमाम्यहम्।
There's nothing to thank because they are our own monks, very respected, adored, and loved by all. So you heard about the Holy Mother from two dimensions you can see. एक तरह महाराज जी में ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं मध्य नहीं गए. You not go so much into the incidents, but rather philosophically he presented before us. It was more, probably appealing to your intellect. महाराज ने जैसे उनकी तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा माँ की घटनाएं लेके ऐसे चर्चा किया, that probably touched more your heart probably. So we always want a combination of the head and heart. So Maharaj, because he is known for his intellectual abilities, he could only pata hai, but of course he took less time because he was very conscious that it should not be beyond our stipulated time. So he thoda jaldi se kiya, lekin he gave very wonderful insights philosophically about the idea of mother, how she is the head of the family, how she is in an extraordinary position, and also how her own approval of the Western disciples, how she dealt with all of them. He covered a vast subject, but more in a very philosophical manner, so that we understand the real significance. So Maharaj straight away appealed to our heart, क्योंकि इतनी घटनाएं हैं माँ के जीवन में. He also traversed a vast field and placed before us many interesting incidents of Mother's life. And through them, he drove home the points. So, यही जगह पे हम लोग आज की सभा समाप्त करते हैं. So let us go on माँ की अनुध्यान जो सुना, at least let us think this evening and also the whole of the night. So let's come back tomorrow, be prepared to hear about Swamiji. So I think this is how we should end this sabha. Of course we are very particular about time because 7 बजे से आरती है. अभी naturally all been sitting, but either with the jacket by 7, those who want, you can attend the आरती. सुबह कल जल्दी से आ जाइए because tomorrow we have a whole lot of programs. पहले तो 7, 7:30 से 7 बजे से मंदिर में पूजा वगैरह, स्पेशल पूजा और भजन भी होगा. Probably अगर अधीक्षा will come, क्योंकि वो सब 10 बजे के पहले खत्म हो जाएंगे. It will be over before 10 program. Yeah, but then morning all of you come at least latest by as early as possible. If you don't want to miss tea, then by 10 o'clock our sessions will start. 10 बजे से होगा 11:15 तक, and then for 1 hour we will have 11:45 to 1:45 Param Punjya President Maharaj ki Smaran Sabha. Again the 3 of us will speak for about 1 hour. It will be the reminiscence of Most Great Maharaj. And if possible, I may have to ask whether one or two devotees also may speak a few words, his disciples, and find out. And then again, after 12:45, we have Noon Prasad till 1:30, and 1:30 to 2:30 again, our Champak Babu and our Abhi, both of them will speak. We delight you with 1 hour of devotional music. Then 2:30 to 3:10 again we have Sri Ramakrishna, Adhyaksha and Sri Ramakrishna's life, his sadhana. स्वामी जी के बारे में हम लोग स्वामी जी और भारत माता यही टॉपिक में ये विषय पे चर्चा करेंगे. लेकिन the final session will be Sri Ramakrishna and sadhana. Again ये दोनों सज्जन विद्वत सन्यासी दोनों में बोलेंगे. Then of course we'll have finally 5 minutes, 10 minutes to just thank everybody, and then we'll Ram Saranam and tea till we over by 4:15. All of you are welcome. You can call आते, so don't sit in the edges. आप सब बीच में ही बैठना है, क्योंकि otherwise later on it will be difficult for others to get in. We expect about the auditorium will be full, and we expect about 200 devotees to attend, because दोनों function है. किसी लोग सिर्फ स्मरण सभा सोच के आएंगे, but of course we have a lot of people, about 175 or so have registered for the program itself. So please come well in time, take your seats so that others can come and sit. ऐसे बैठेंगे, कोई काली सीट में बैठने की किसी को दिक्कत ना हो, किसी को पता है. With that we close today's discussions. So all of you go now, because tomorrow evening after the function you can offer pranams to both the Maharajas. Now you need them, and you better to just go to temple, otherwise you will miss the Aarati.
ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु